तुम्हारा तो बहुत अच्छा है। Good morning, ma'am. Good morning. Can keep your microphone muted. Sorry, microphone muted and camera on. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. So in the last class, we were discussing what is the narrative style of writing. So can anyone tell me the definition of narrative style? I'll give you 3 questions. The definition of narrative style, the elements in narrative style of writing, and what is your example of narrative style? Kahela. Good morning, ma'am. Good morning. अपना कैमरा और ऑन रखिए और माइक्रोफोन ऑफ रखिए. उल्टा रहता है, माइक्रोफोन ऑन रहता है, कैमरा ऑफ रहता है. I asked you a question. नहीं. Yes, Priyanka, what is narrative style? Good morning, ma'am. कैमरा बंद करके गुड मॉर्निंग मत कहा करो. Ma'am, I hadn't done your 2 classes. Why? Because of some personal reasons, ma'am. क्या कोई नहीं बता पा रहा है तो सबको 0 दे दें आज हम. What do you understand by narrative style? Ma'am, it tells the clear story. कौन बता रहा है? जो भी बता रहे हैं अपना कैमरा ऑन करके बताइए, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन बोल रहा है. Okay. Yes, please recap. What is narrative style? It basically Good morning, ma'am. Tell me. Basically what? Basically used to spoke or convey the story, ma'am, to the audience, ma'am. तुम लोग ये टर्म जो यूज टू बोलते हो, दिस इज अ पास्ट टेंस. ये पास्ट टेंस एक्सप्रेशन है. यूज टू किया करते थे. तो यहाँ पर किया करते थे वाली में तो कोई बात तो है नहीं. It is basically used, ma'am. So it is basically used in what? Ma'am, it is basically used to spoken a story to the audience, ma'am. Convey a story. क्यों? सिर्फ बोला जाता है कि लिखा नहीं जाता है क्या? लिखा भी जाता है. तो फिर spoken बोल रहे. Then why you are using the word spoken? Having both spoken and written, conveying to the audience. Okay. And what are the elements required in this? Elements, ma'am, elements are their characters, ma'am. The main character, the supporting character, and main character, supporting character, and the other character which play the role in that story. और क्या स्टोरी में क्या क्या रहता है? What are the elements? बताया तो गया था, टेक्निकली बताया गया था. Elements सही पता हूँ. क्यों नहीं पता है? नोट्स आप लिखते नहीं हो ना. आप डिपेंड करते हो कि चलो मैम ने तो शेयर कर देना ही है, तो लिखने की जरूरत क्या है. अगर ना शेयर करूं तो? Ma'am, there are 4 types of element: beginning, middle, ending, and editing. Okay. What is in the beginning? Introduction of characters, ma'am. And who are the main character, and what is
main characters introductions and name Their of the role. And what? names Their of the role. characters Hmm. Yeah. and what are the roles of them. टेक डाउन द नोट्स. जब भी कुछ पढ़ाई होती है ना, नोट्स लिखा करिए. नोट्स आप नहीं लिखेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे. कंटेंट आपको हम भेज भी देंगे तो कितने लोग उसको पढ़ते भी हैं? डू यू इवन हैव द टाइम टू रीड दैट? यस मैम, टाइम निकालते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ते तो लेकिन लिखोगे नहीं तुम लोग. जब तुम लिखोगे तब तुमको याद हो जाएगा, तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. लिखने का भी क्या लिखने का भी टाइम नहीं है? तो जाओ तुम क्लास में, फिर क्यों जाओ यहाँ से. जब तुमको नोट्स लिखने का टाइम नहीं है तो तुम क्लास अटेंड क्यों कर रहे हो? जाओ आराम से मस्ती करो. आई एम रिकैपिंग. अब रिकैपिंग के बाद हम 5 मिनट के बाद वापस आके हम पूछने वाले हैं. एंड इफ यू विल नॉट आंसर मी, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. व्हाट इज दिस? पिछले क्लास में कुछ बताया गया, इस क्लास में आप नहीं रो जाते हैं. The teachers will continue to teach the same kind of thing every day, same lessons every day, day in and day out. Why? Because for one reason, notes नहीं लिखे थे हम, याद नहीं है. This is the last time I'm warning you. Whatever I'm teaching, take down the notes. And Parvinder is present today, and Yes, ma'am. Yashanshi is present, and Ravi Raj is present. बाकी सब मेरे लिए एब्सेंट है आज. डोंट कम रनिंग टू मी. मैंने क्लास किया है और मेरा 0 हो गया. 0 होगा तुम्हारा, फिर 0 होगा तुम्हारा. And don't message me. I have attended all the classes. You have given me 0. Yes, I will be giving you 0. For one reason, why you have switched off your camera. अभी भी लोग सुन नहीं रहे हैं. Maybe they are not in the classroom. I think I should start removing people who are not in the, who will not listen to teachers. When you're being asked to keep your cameras on, you keep your cameras on. नहीं तो let me remove you one by one. ठीक है, it will take some time, but I will do this today. मैं रिमूव कर रही हूँ. 1 मिनट. कुछ टाइम लगेगा, लगे टाइम. आप तो खुद अपने दुश्मन बने बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बार बार कहने पर भी आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे. इट मीन्स you're not even there. नहीं है आप लोग क्लास में. I will not allow anybody without the cameras on. This is for sure. उसके लिए आपको अच्छा लगे बुरा लगे, I don't care. किसी का भी कैमरा ऑफ है, रूम से निकाल दिया जाइएगा. 6 months आपको बताया जा रहा है कि कैमरा ऑन करके क्लास नहीं किया जाता है. कैमरा ऑफ करके गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं. व्हाट इज दिस? Are you trying to be, if you're trying to be too smart, teachers are smarter than you. कैमरा बंद कर दिए हैं, रूम से बाहर हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं. व्हाट इज दिस? एंड देन यू कीप कंप्लेनिंग ऑफलाइन क्लास कब से होगा? मैम समझ में नहीं आ रहा है. तो तुमको समझ में कहाँ से आएगा? यू नॉट अटेंडिंग योर क्लासेस, यू आर नॉट इवन देयर इन द क्लास. आप अपने घर में हैं, यू आर इन द comforts of your room, your house.
फिर भी तुम कमरे में नहीं हो, फिर भी तुम क्लास नहीं कर रहे हो, अटेंडेंस के लिए लॉग इन कर लिया, इसको बाद तुम लापता हो। नहीं चलेगा, मेरे क्लास में तो नहीं चलेगा, और कहीं चलता होगा, मेरे क्लास में नहीं चलने वाला है। ठीक है, पढ़ाई कम होगी और एक्टिविटी ज्यादा होंगे, रिमूव करना। ठीक है, आई नाउ हैव रिमूव्ड एवरीबॉडी, और दिस इज अ वार्निंग टू ऑल ऑफ यू, किसी का भी हम ऑफ देख लिए, आई विल रिमूव। मोहम्मद तबरेज, फिर तुम बंद कर लिया अपना। ठीक है, तुम अब घर में पढ़ना, अब सेल्फ स्टडी करना तुम, अब हम नहीं अलाउ करने वाले हैं अपनी क्लास में। चलिए, अभी जो कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे, पहले आपको पढ़ाएंगे। आपने पूरा पिछले क्लास का जीरो कर दिया, आपने कुछ लिखा होगा, कुछ नहीं, यू डिड नॉट टेक डाउन एनी नोट्स। एंड रविशंकर, कैमरा अपना ऑन करके माइक्रोफोन म्यूट किया करो। एंड हु इज दिस अंकित? एक्सक्यूज मी मैम, मैम 61 रोल नंबर का कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, आपने रिपोर्ट उसे मार दिया। हाँ, रिमूव कर देंगे हम। हाँ तो आप ऐड ले लीजिए। क्यों? वो निकल गया। मैम उसका कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। क्या मैम? मैम टेक्निकल ग्लिच था। ये बहाना बहुत पुराना हो गया। नहीं मैम, न्यू बहाना है। होता है मैम, कभी कभी होता है मेरा भी मैम हो ऐसा। जाता है मैम, कभी कभी। नहीं हो बोल रहा जाता है है कि ओके, ये बोल रहा है न्यू बहाना है। न्यू न्यू बहाना है, तेरे को बताते हैं कि न्यू बहाना है, ओल्ड बहाना क्या होता है। चलिए, आई एम नॉट गोइंग टू एडमिट एनीबडी नाउ, हो गया। लेट इट बी अ लेसन। नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास। तो जिस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाए, रिकैप करें फिर उसी चीज को। अरे, अभी जो सामने लिखा हुआ है स्लाइड में, जो आप देख रहे हैं, राइट दैट डाउन। और उस लड़के ने कहा कि क्लासरूम में भी लिखने का टाइम नहीं है। आई विल शो यू कि लिखने का टाइम कैसे होता है। Now the narrative writing style, I'm recapping it from last class. So narrative style checklist, it should have a beginning. Number one, जो परविंदर ने कहा था, सही है, it should have a beginning, it should have a middle, and it should have an ending. But she could not answer what is included in the beginning. ये आंसर वो नहीं कर पाई। वो क्यों नहीं कर पाई? इसलिए कि उसने लिखा ही नहीं, नोट्स बनाए ही नहीं। अभी फिर हम लिखवा रहे हैं आपको, और इस बार अगर जवाब नहीं दिए हैं तो आई विल ट्रीट इट एज अ मार्क यू। So in the narrative style of writing, each narrative writing style has a beginning, has a middle, and has an ending. ये 1 मिनट, तबरेज कुछ तुमको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लिखने के लिए कहा मैम जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिए मैम, लिख लेंगे मैम। नहीं, स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर नहीं लिख रहे तो आप जाइए यहाँ से। अगर टीचर के बाद ये नहीं मारे तो आप मैम। यू आर रिमूव्ड। सही, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको नोट्स बनाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? जब तक कि आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो आप कुछ काम भी नहीं करेंगे।
Okay. लिखिए इस चीज को. Narrative writings, each narrating style has a story to tell. The story, each narrative style has a beginning, has a middle, has an ending, which needs to be edited before publishing or before speaking. So first thing first, narrative style has a beginning. What will you be including in the beginning? It means you will try to attract the attention of the reader by choosing a topic. अच्छा, सभी को निकाल ही देते हैं, एक बार में झंझट खत्म हो जाएगा. If you will not listen to me, I will not listen to you. So, narrative style has a beginning. The beginning includes 3 points. The first is choosing a topic to attract attention. Beginning means choosing a topic. Why choosing a topic? Choose such a topic that you will attract the attention of the reader. Second is you describe the setting. Description of the setting. Choosing a topic, number 1. Number 2, description of the setting. And the third point is introduce the characters. Introduce the characters. So the beginning has 3 points. Already it is written. I am only explaining. The beginning has 3 points. The first is choosing a topic. Such a topic that it will attract the attention of the reader. Choose a topic. Second is description of the setting. Describe the setting. And the number 3 is you introduce the characters. Done? Yes, ma'am. Okay. So what is in the middle? Sorry, what is in the beginning? Tell me. क्या लिखा आपने? Ma'am, attract the attention of audience by choosing a topic, Good. description of the setting, and introduce the story characters. Yes. और ये आप क्या आपने क्या लिखा? This is the first part only. In 3 parts, the beginning part. Yeah. So Parvinder, you could not answer this question in the morning. Okay, what is included in the beginning? Choosing a topic, describing the setting, and including the characters. I will take a mark you on this only, writing styles. Now the middle part. And those who are depending कि screenshot ले लेंगे हम. Screenshot लेने से पढ़ाई नहीं होती है जब तक कि आप लिखिएगा नहीं. The middle part. In the middle part, you use the 5 senses to create atmosphere. It means 5 senses means what the reader will see, what the reader will feel, all the 5 senses. What are the 5 senses? Sight, sound, hearing, smelling, and touching. So you have to use the 5 senses to create atmosphere. Like one day the farmer saw. What did he feel? What did he hear? The characters, you have to bring them alive. So use the 5 senses. The middle is using the 5 senses to create atmosphere.
And then some action is included. Some action. Stories have actions. And then you have introduced the problem of the event. So everything was going well until one day when he saw that अब कुछ एक्शन यहाँ होना चाहिए जो कि डेली जो चीज हो रहा था वो आज नहीं हो रहा है. तो some action is here. For example, if you're talking about, if you're writing a story about a small little girl who always wanted to go to school, जो हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, तो स्टोरी क्या बता रहा है? In a small town, there lived a small family with a child. You can give the character's name, Mr. and Mrs. so and so, and they had a beautiful, lovely daughter. She was studying in a primary school, and she was a girl who always loved school. She always wanted to go to school. But one fine morning, she did not want to go to school. This was the action. Some activity happening. So what was the activity? She did not go to school. The bus came and the bus left without her. So they noticed that the little girl was crying. This was the action. What was the problem? The problem was that she had not gone to school and she was crying. So where is the problem? That has to be sorted out. So the middle part you will introduce all the 5 senses. What did they see? What did they hear? What did they feel? What did they touch? What happened? You mean you are including emotions in the middle part? मैम नेटवर्क इशू के कारण कुछ स्टूडेंट्स लीव हो गए हैं. आरोग्य ये हमेशा इनका ये ग्लिच जो है ना, दिस हैज बिकम वेरी कॉमन एंड सेम ओल्ड स्टोरी. ये भी कहानी है एक, कभी तो कोई डिफरेंट कहानी बताओ. हमेशा राइजिंग एक्शन वही रहता है. क्या बात है? नेटवर्क इशू, लीव हो गए हैं, सोल्यूशन मेरे पास है, मैम उनको एंट्री कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, कहानी खत्म. दिस इज मैम आपने पहले जो लिंक भेजा था उसमें ज्वाइन हो गए. सेम स्टोरी. चलिए, why I was angry was that you are not taking down notes. और फिर वो बंदा कहता है कि मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा. ये क्या, मतलब what is this height of impertinence? स्क्रीनशॉट लेके पढ़ाई करोगे तुम? Anyways, so rising action क्या है, falling action क्या है, theme क्या है, sequence क्या है? तो सेट तो हो ही क्या कि the whatever you want to give the story a name, whatever name which you want to give the story. So you have in the middle, what will do? You will use 5 senses to create atmosphere, and then you will include action, what actually happened, and then action के बाद क्या होता है? You are going to use the problem or event. Anamika, why are you smiling? Are you thinking of some story to tell me or something? Do you have a nice story to tell? So you will introduce problem or event. ये 3 bullets डले हुए हैं सब में. ये 3 bullets आपको ध्यान में रखने हैं when you start writing or telling a story. And now the ending. I hope you have written down the 3 bullets of the middle part. 5 senses to create atmosphere, action, and problem. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. And then Ritu Priyadarshi, you are telling a story right now. ध्यान देना. And now the ending. The concluding the story. Concluding में क्या करना है? Conclusion में क्या करना है? You will solve the problem. तो यहाँ problem क्या था? That little boy, the action was that the rising action was that the bus came and left without the child. बस आके चली गई, बच्ची स्कूल नहीं गई. ये एक्शन था.
So I have introduced the problem. This was the problem. Every day she was going, but now today she did not go. And then in the ending part, you will try to resolve the problem. And in resolving the problem, of course, the second bullet is that you will use powerful verbs and words and adjectives. You will put in a lot of descriptive words, powerful words, so that it will create an image on the reader. Okay? By using powerful words, by using verbs. Verbs are actions. So third part, the ending part, the concluding part, resolve the problem, the solution of the problem, resolving the problem, using powerful words, using positive words to create an image, and dialogue. Now, why dialogue is very important? Because it brings everything to life. Now, dialogues are very important in some stories. There are a lot of stories which start with dialogue. So there's a story, The Parrot in the Cage. A story, Parrot in the Cage. And it starts with a dialogue. Koi setting nahi, nothing. No beginning. No. The topic was done, The Parrot in the Cage. Fine. So the very story starts with a dialogue. And it's about a bird calling out. You don't even know who is calling whom. That is so interesting. Imagine the story Parrot in the Cage, and the story starts with a dialogue, and that dialogue is "Ni Rukmini tu kitte." अभी आपको इमीडिएटली समझ में सोचना जाना चाहेंगे कि कौन रुक्मिणी कौन है, ये कौन उसको पुकार रहा है, व्हाट इज द अर्जेंसी इन द वॉइस. तो विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स ये डायलॉग रहता है, नी रुक्मिणी तू कितने. द स्टोरी स्टार्ट्स विद दिस डायलॉग. इट क्रिएट्स अ वाइब्रेंसी. So the moment you see such dialogues, you would want to know कौन किसको पुकार रहा है, क्यों पुकार रहा है, ये रुक्मिणी कौन है और रुक्मिणी को कौन पुकार रहा है. So in the next paragraph, we will introduce the parrot continuously called out Rukmini tu kitte, and it had learned it from her friends. तो साफ सामने आ गया कि ये उसके फ्रेंड से सीखा था उसने ये डायलॉग, कि जब भी रुक्मिणी के फ्रेंड्स आते थे तो बाहर से पुकारते थे नी रुक्मिणी तू कितने, तो उसका जो पैरेट है वो सीख लिया था उसको. तो डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टोरीज. It creates a vibrancy. It arouses interest in you, in the reader. It creates a picture. So the ending will include resolving the problem, using powerful verbs and adjectives, and include dialogues. So after you've done this, the beginning done, the middle done, the ending done, the resolutions done, the dialogues included. Now, it's not that you will include the dialogue only in the end. इसका ये मतलब नहीं है. इसका मतलब है कि dialogue आपको all through करना है. Throughout the story, you have to put in dialogues. So when you're done with the beginning, the middle, the ending, इसको इसीलिए हम हटा दिए थे. That was one reason why I removed him. So after you finished the beginning, the middle, the ending, then you edit. There are some points
How will you edit anything? You will check for spellings and punctuations. Spellings, punctuations, grammar, everything. You can use thesaurus or you can use the net to find synonyms or verbs or words so that you do not repeat yourself. Any word which you feel is good. So, and finally, you will check that yes, my story makes sense. मतलब कोई बेतुका स्टोरी नहीं है, बिना सिर पैर का कोई स्टोरी नहीं है. This story has a body, has a face. It has a face, it has eyes, it has ears, it has a body. This story it does make sense. So all this is included in narrative style of writing. Got it? I might take your mark in the next class, and if you will not answer, you will get a big 0. Screenshot correct. हाँ yes. अभी जिसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Otherwise, I'm moving on to another writing style. मैम मार्कियो कौन से किस टॉपिक पे लीजिएगा? अभी क्या पढ़ाया जा रहा है? हाँ? Are you really? मैंने क्या कहा? मैं क्या पढ़ा रही हूँ इन दिनों? मैम अभी तो आप ये एक्सपोजिटरी राइटिंग और नैरेटिव राइटिंग पर आप फोकस कर रही हैं. तो मार्कियो किस चीज का लेंगे? जो पढ़ाया गया वही ना होगा जी. उसी पे. सॉरी मैम, सॉरी. Ask relevant questions. I'm not asking don't ask questions. लेकिन पूछो वही जो. चलो. Ma'am. हाँ yes what? Can you explain the second point in editing? I have used thesaurus का मतलब क्या होता है? thesaurus नहीं जानते तुम? वही पूछना था. मैम थेसिस टाइप का कर सकते हैं, जो ट्रांसलेशन या थेसिस इन इंग्लिश. नहीं thesaurus मतलब जिसमें वर्ड्स का आपको एक वर्ड का many मीनिंग मिल जाता है. thesaurus को उसी कहते हैं. For example, if you are searching a word, I am shocked. The word shocked आता है. अब shocked को thesaurus में कितने तरह से बोला जाता है? सर्चिंग द वर्ड बाय डिक्शनरी. कितने synonyms उसमें मिल जाएंगे आपको? shocked, surprised, bewildered, taken aback, बहुत सारी चीजें. Thesaurus is like a dictionary, but it deals with synonyms only. मतलब भी बताता है और synonyms भी बताता है thesaurus. ठीक है? It is like a dictionary. Thank you, ma'am. आपके घर में नहीं है thesaurus, तो आपके घर में होना चाहिए. It gives you the synonyms and the meanings of various words. Anything you need to ask? Chali. So narrative writing style tells a story. Now, when I told you to define narrative styles, aap sab chup, you were all quiet. So narrative style tells a story, real or fictional. It can be a real story, it can be fictional. जैसे आपने देखा है, narrative writing style is like telling a story. जैसे कि किसी स्टोरी या मूवी या पिक्चर का प्लॉट इज द फोकस ऑफ द स्टोरी इज यूजुअली रिवील्ड chronologically, but there are sometimes flash. Raviraj, stop reading from any book. ठीक है? मैम आप ही का वाला लाइन पढ़ रहे थे. हाँ ठीक है, तो तुम जो बताओ वो ज्यादा अच्छा है ना. Narrative writing style tells a story. It can be real or fictional. Real का मतलब होता है सच्ची कहानी हो सकती है. सच्ची कहानी तुम्हारी हो सकती है, तुम किसी को जानती हो उसकी हो सकती है, किसी फ्रेंड की हो सकती है, किसी सेलिब्रिटी की हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू गेव मी द स्टोरी ऑफ राहुल बजाज, जिसका एक बिगिनिंग था, his early life, his college life, what he is doing now. So, do you guys know that 2 days ago he passed away?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Well, how did you feel? You talked about him so much. Rahul Bajaj was always dying. We spent an entire month talking about Rahul Bajaj. Finally, he died in Pune. Yes, ma'am. हाँ, तो उसका कुछ अब चेंज करना पड़ेगा कुछ उनका। ज्यादा ही याद कर लिया था उनको। कुछ लोग उनको ज्यादा ही याद कर लिए थे। Okay, so narrative story can be real or fictional. Fictional का मतलब है काल्पनिक, जो कि सच्ची नहीं। सोची वैसे समझी। क्या? Virtual. सोची समझी। हाँ Imaginary, ma'am. हाँ, फिक्शनल मतलब ही होता है कि नॉट रियल। Whether or not the events described really happened, वाकई ऐसा हुआ था। This type of writing is all about presenting the story in a way that readers will enjoy and understand. And which of course will be inclusive of the beginning, middle, and end. So you write in a way, people write stories in a way so that others will read and understand and enjoy. The events don't have to happen in chronological order. कोई जरूरी नहीं कि chronological order में हो जाए, पहले ये हुआ, पहले वो हुआ, नहीं. Like I said, the story started with dialogue, with a dialogue. So it can be any way which you want to. It can happen the way you want it to happen. But they must capture and hold the attention of the reader. Your writing or any writing, any story should capture the attention of any reader. So the main objective of any story writer is that his story will be read, understood, and enjoyed. Now I've answered the question. What are the elements? Checklist in the writing style, the elements, the definition, and now types of narrative style. Narrative writing can take many forms. It can be your own story, such as a memoir. It means something which you remember from the past, or a personal essay, like my best day at my saddest day, my happiest day in school. A weekend at home. So whatever, it can be any personal essay which you want to write. It can also be the story of a historical event or a work of fiction. किसी historical events के बारे में भी आप fiction लिख सकते हैं, or it can be simply your imagination, काल्पनिक, such as a short story or a novel. Now here are the types of writing. The first is anecdotes. Anecdotes का मतलब होता है a short interesting story about a real person or event. The definition of anecdote: short story about a real person or an event. Mostly you see the celebrities, they all talk about their anecdote. अपने experience के बारे में वो लोग बात करते हैं. आप देखा होगा कोई कॉफी विद कर्ण है या कोई भी सेलिब्रिटी को कोई अगर इंटरव्यू लेते हैं तो पूछते हैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताइए जब आपका पहला शो हिट नहीं हुआ, या तो they will talk about their anecdotes. It means they will tell you a short interesting about a real happening that came across. So anecdotes का मतलब ही होता है something which is real about a person or an event, something which really happened. So the second is novellas. Novellas का मतलब होता है a short novel. Novels are supposed to be big. छोटा सा novel है तो उसको कहते हैं novella, या लंबी सी कहानी है, long, a short story which is not a novel,
a short story which is pretty long. So narratives can also be novels. It is not working. No. टूटा हुआ देखिए नहीं it had to be replaced. So anecdotes, types of narratives, anecdotes, novellas, short story, a long short story or a short novel, or novels, oral history. What do you mean by oral history? Something which you have heard, जो तुमने सुना है, or you have interviewed people. Heard, interviewed. तो कुछ तुमने सुनी कहानी, तुमने सुना है, तुमने रेडियो पे सुना है, तुमने यूट्यूब पे सुना है, तुमने किसी का इंटरव्यू लिया और वो उस कहानी को जाना है. So it is all about, you have not read, but you have not seen, but rather you have heard. Oral means already the spoken word. You must have heard stories about the freedom struggle. Your father must have told you some stories. Your grandfather must have come up with some stories. So in the olden days, the grandparents always told stories to their children. So this is called oral history, something which you have heard, or you have come to know the story by interviewing people. And then another category of narrative style is poems. Every poem is a story, tells a story. Every poem will tell you a story. But the writing style is different. It is written in rhymes, but it is a story. And of course, short stories. All short stories are examples of narrative writing style. Example, you will come up with your own examples. So in this type of writing, the goal is to tell the reader what happens in a way that is compelling, that the person should be interested to read the entire story. This can involve creating characters and describing settings in a way that makes the story more realistic. However, while descriptive details are part of the narrative writing style, this type of writing is not solely about description. This is about what happened in the story. You can see this in action in this example of from Oliver Twist by Charles Dickens. Examples I'm omitting because you will come up with your own styles of own stories. So these are the examples which you can read it out, but then I want you to come up with your own writing style. So what are the tips for writing style? I will conclude this today. Another 5 minutes. If you're writing a narrative, keep in mind that you are telling a story. Include details and information that will keep your reader engaged. Okay. Include all the pieces of the story. How did it start? What happened to make it exciting? How did it end? Know why you are telling the story. Even though the story is the purpose, keep your reason for telling it in mind. Keep the point of view consistent throughout the story. Stick to the story. Avoid extraneous details that will distract the reader. Do not add a lot of details that can exhaust the reader from reading it. So avoid details, useless details, extra details that may distract the reader. बहुत ज़्यादा तुम describe कर दोगे तो the main focus on the story वो खत्म हो जाएगा. Descriptions
can distract what really happened in the end. Any questions you have? Yeah, any questions? No, ma'am, it will be fine. I hope this time you have taken down the notes. जब आप नोट्स बनाते हैं ना, फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है. अगर हर क्लास में आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा. बिकॉज एक बार ही जब आप लिख लेते हो, देन यू डोंट यूजुअली फॉरगेट. आप नहीं भूलते उसको, जैसे कि आपने लिख लिया हुआ है. एंड व्हेन द टीचर विल आस्क, डेफिनेटली यू विल आस्क फॉर. So when you write it down, then you will be comfortable with any kind of question which is going to come your way. Became easy, ma'am. Yes, it becomes easy. Any work done, any prepared, you're preparing yourself for the future. So when you take down notes, 90% work is already done. What you need to do, you will only revise it. Fine. That's it for today. Thank you, ma'am.